Bismillahirrahmanirrahim. Well, before this, we have read that the girls danced, and afterwards, that was chained apparently into witchcraft. And then all the people of Salem, the big shots, the society, the individual, they gathered in the house of Paris. And afterwards, the scene comes to the house of John Proctor, where we come to know that he's having some kind of cold relation with his wife due to his affair with Abigail. Hale, who had come in Act 1, now enters the house of Proctor because his wife is alleged. So, quite suddenly, as though from the air, a figure appears in the doorway. They start slightly. It is Mr. Hale. He is different now. Drawn a little, and there is a quality of deference, even of guilt, about his manner now. So now we see Hale, and when we see him, we find him changed, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा है, तगय्युर नज़र आ रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर एक गिल्ट छाया हुआ है. So this guilt is because of his first detection of witchcraft in Tituba, which was obviously not there, but she did it, or she did so to save her life. So now he knows that not every person who is blamed is under the influence of witchcraft. Hale, good morning, good evening. Proctor, still in shock. So Proctor cannot believe that Hale comes to him. Why, Mr. Hale, good evening to you, sir. Come in, come in. To Elizabeth, I hope I don't startle you. कि मैंने आपको अचानक हैरान नहीं किया. No, it's only that I heard no horse. कि घोड़े की आवाज़ नहीं आई इसीलिए थोड़ा सा हम चौंक गए. You are good wife Proctor? क्या आप मिसेस Proctor हैं? Aye, Elizabeth. हाँ, ये मेरी बीवी Elizabeth है. Notes then. I hope you're not off to bed yet. तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी सोने नहीं वाली थी. Proctor setting down his gun. No, Hale comes further into his room, and Proctor, to explain his nervousness. We're not used to visitors after dark, but you're most welcome here. Will you sit down, sir? कि हमारे पास शाम को मेहमान नहीं आते शाम के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा वो नर्वस है, लेकिन हम आपको वेलकम करते हैं. बैठें आप. I'll sit. He sits. Let you sit, good wife Proctor. कि आप भी बैठ जाए. She does, never letting him out of her sight. There is a pause as Hale looks about the room. तो Hale कमरे को देखता है. Proctor, to break the silence. Will you drink cider, Mr. Hale? So this is Mr. Hale who has come. Hale, no, it rebels my stomach. कि मेरे stomach को suit नहीं करती. I've some further traveling yet tonight. Sit you down, sir. Proctor sits. I'll not keep you long, but I have some business with you. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन कुछ काम है. Business of the court. कोई अदालत का काम है. No, I come of my own, without the court's authority. Hear me. He wets his lips. I know not if you are aware, but your wife's name is mentioned in the court. कि मैं अपने तौर पे पूछने आया हूँ, और शायद तुम्हें ना पता हो कि तुम्हारी वाइफ का नाम भी कोर्ट में लिया गया है. We know it, sir. Our Mary Warren told us. We are entirely amazed. हमारी मुलाजमा मैरी वेरन ने बताया है हमें, और हम हैरान हुए इस बात पे. Hale, I'm a stranger here, as you know, and in my ignorance I find it hard to draw a clear opinion of them that come accused before the court. And so this afternoon and now tonight, I go from house to house. I come now from Rebecca Nurse's house. And तो वो कह रहे कि मैं अपने तौर पे जज करना चाह रहा हूँ, तो क्लियर ओपिनियन लेना चाह रहा था, इसलिए मैं उन तमाम लोगों के घरों से आ रहा हूँ जिनको एक्यूज़ किया गया. तो भी मैं रेबिका नर्स के घर से आया हूँ. एलिजबेथ शॉक्ड. रेबिका इज चार्ज्ड? रेबिका पे भी इल्ज़ाम लग गया. Here, God forbid such a one be charged. She is however mentioned somewhat. उसका सिर्फ थोड़ा सा तज़किरा हुआ है, और अल्लाह माफ़ करे कि ऐसी खातून का नाम लिया जाए. With an attempt at a laugh. You will never believe, I hope, that Rebecca trafficked with the devil.
आप तो उस पर यकीन नहीं करेंगे कि रबीका ने डेवल के साथ कोई साजबाज की, उसके साथ रिलेशन रखा। हेल वुमेन, इट इज़ पॉसिबल कि जहाँ डेवल का मामला है कुछ भी हो सकता है। टेकन अबैक, श्योरली यू कैन नॉट थिंक सो। आप उम्मीद है इस बात पे यकीन नहीं करते। हेल, दिस इज अ स्ट्रेंज टाइम मिस्टर, sorry. No man may longer doubt the powers of the dark are gathered in monstrous attack upon this village. There's too much evidence now to deny it. You will agree, sir, कि डार्क जो है फोर्सेस उनकी पावर ज़्यादा है, दे कम एंड दे अटैक एनीवन, और आप इस बात को मानते होंगे। इवेडिंग प्रॉक्टर, I have no knowledge in that line, but it's hard to think so pious a man be secretly a devil's bitch after 70 years of good prayer. कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैं मान नहीं सकता कि एक खातून 70 साल की हो गई है और इतनी अच्छी इबादत करती है, लेकिन अंदर खाते वो डेवल के साथ है। सो ये समझ में नहीं आता। आए, but the devil is a willy one, you cannot deny it. डेवल बहुत चालाक है। However, she is far from accused, and I know she will not be. I thought, sir, to put some questions as to the Christian character of this house, if you will permit me. ये कोई सवाल है सिर्फ ये देखने के लिए कि आप जो क्रिश्चियन हैं तो किस हद तक हैं, किस हद तक मानते हैं। Proctor, coldly resentful. Why? We have no fear of questions, sir. कि हमें कोई डर नहीं। Good then. He makes himself more comfortable. In the book of record that Mr. Paris keeps, I note that you are rarely in the church on Sabbath day. कि प्रॉक्टर का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, दैट टेल्स कि आप कभी कभार ही संडे के दिन चर्च आते हैं। नो सर, यू आर मिस्टेकन, प्रॉक्टर कहता है। 26 टाइम इन 7th month, sir. 17 months, sir. I must call that rare. Will you tell me why are you so absent? Proctor, Mr. Hill, I never knew I must account to that man, for I come to church or stay at home. My wife was sick in this winter. कि उस बंदे का इससे कुछ लेना देना नहीं अगर मैं चर्च नहीं आता या घर रहता हूँ। मेरी बीवी बीमार थी विंटर में, मैं नहीं आया। So I am told. But you, mister, why could you not come alone? तो ठीक है, बीवी बीमार थी, मुझे भी ये बताया गया, लेकिन तुम अकेले क्यों नहीं आए? Proctor, I surely did come when I could, and when I could not, I prayed in this house. कि जब मैं आ सकता था मैं आया, और जब नहीं आ सकता था तो मैंने यहीं पे इबादत की। Here, Mr. Proctor, your house is not a church. Your theology must tell you that कि तुम्हें ये दीन का इल्म होना चाहिए कि तुम्हारा घर चर्च नहीं है कि जिसमें तुम बैठ के इबादत कर सको। It does, sir, it does. And it tells me that a minister may pray to God without he have golden sticks upon the altar. कि बिल्कुल, लेकिन मेरा रिलीजन ये बताता है कि एक मिनिस्टर जो है उसे इबादत करनी चाहिए बगैर गोल्डन कैंडल स्टिक्स की बात किए वो लोगों को प्रीच करे। यानी वो बता रहा है कि पेरिस जो है मटीरियलिस्टिक है। What golden sticks? Since we built the church there were pivoted candlesticks upon the altar. Franciscaners made them, and a sweeter hand never touched the metal. But Paris came, and for 20 weeks he preached nothing but golden candlesticks until he had them. I labor the earth from dawn of the day to the blink of night. And I tell you true, when I look to heaven and see my money glaring at his elbows, it hurt my prayer, sir, it hurt my prayer. I think, sometimes, the man dreams cathedrals, not clapboards meeting houses. कि जो पेरिस है वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। मेटल की बनी हुई कैंडल स्टिक्स फ्रांसिस नर्स ने बनाई थी, वहाँ पे लगाई थी, लेकिन ये बंदा 20 हफ्ते लगातार गोल्डन कैंडल स्टिक्स को प्रीच करता रहा, यहाँ तक कि जो चंदा इकट्ठा होता था उससे उसने वो ख़रीद ली। और जब मैं देखता हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मेरे पैसे से वो कैंडल स्टिक्स ख़रीदी गई जिसके साथ खड़े होकर वो प्रचार करता है, तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं इसलिए नहीं जाता। हेल, थैंक्स दैट
And yet, Mr. A Christian on Sabbath day must be in church. Of course. Tell me, you have 3 children. फिर भी जो भी रीजन हो तुम्हें चर्च जाना चाहिए था. तुम्हारे 3 बच्चे हैं. आए boys. How comes it that only 2 are baptized? तुम 3 में से सिर्फ 2 baptized हुए, बाकी तीसरा क्यों नहीं हुआ? Starts to speak, then stops, then as though unable to restrain this. I like it not that Mr. Paris should lay his hand upon my baby. I see no light of God in that man. I'll not conceal it. कि पेरिस पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे उसमें खुदा की झलक नज़र नहीं आती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चे को हाथ लगाए. I must say it, Mr. Proctor, that is not for you to decide. The man's ordained, therefore the light of God is in him. ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते. खुदा ने डिसाइड किया तो उसे प्रीस्ट बनाया और उसके अंदर उसकी रोशनी मौजूद है. Proctor, flushed with resentment but trying to smile. What's your suspicion, Mr. Hill? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या सोच लेके आए हो? No, I have no. I nailed the roof upon the church. I hung the door. कि चर्च की छत मैंने बनाई लकड़ी की, उसके दरवाजे को मैंने लगाया. Oh, did you? That's good sign then. ये तो बहुत अच्छी बात है. It may be I have been too quick to bring the man to the book, but you cannot think we ever desire the destruction of religion. I think that's in your mind, is it not? कि मैं शायद बड़ा जल्दबाज वाक़या हुआ कि उस बंदे ने फ़ौरन अपनी किताब मेरे ख़िलाफ़ खोली कि मैं एब्सेंट रहता हूँ, लेकिन हम लोगों ने कभी भी रिलीजन की डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए. Not altogether giving way. I have. There is a softness in your record, sir, a softness. I think maybe we have been too hard with Mr. Paris. I think so, but sure, we never loved the devil here. कि हम बेशक मिस्टर पेरिस के साथ थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम रिलीजन के ख़िलाफ़ थे या हम डेवल को पसंद करते थे. Notes, deliberating this, then with the voice of administering a secret test. Do you know your commandments, Elizabeth? कि एलिज़ाबेथ तुम्हें अपनी वो 10 commandments आती हैं? Without hesitation, even eagerly, I surely do. There be no mark of blame upon my life, Mr. Hill. I'm a covenanted Christian woman. कि मैं एक प्योर कंप्लीट क्रिश्चियन वुमन हूँ और मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है इस तरह का कि मुझे कुछ ना आता हो रिलीजन से रिलेटेड. एंड यू मिस्टर, और तुम बताओ. Proctor, a trifle unsteadily. I am sure I do, sir. He glances at her open face, then at John, then. Let you repeat them, if you will. चलो फिर repeat करो. The commandments, I. Looking off, beginning to sweat. अब प्रॉक्टर जो है ज़ाहिर बात है इज़ अ फॉर्मर, कोई ख़ास पढ़ा लिखा इंसान नहीं है और रिलीजन से वो इसलिए दूर है क्योंकि पेरिस की वजह से वो नहीं जाता, तो बस एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजार है जिससे हर एक बंदा तकरीबन होता है. मसलन 6 कलमे दिन में किसी को नहीं आते होंगे, रेयर लोग होंगे जिनको आते होंगे, बट दैट डजंट मीन कि जिनको 6 कलमे नहीं आते वो मुसलमान नहीं है. तो प्रॉक्टर जो है उसको 10 कमांडमेंट्स अगर नहीं आती या अटकती हैं या भूलता है या परेशान हो रहा है, उसको पसीना आ रहा है, इट डज़ नॉट एट ऑल मीन कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, एक अच्छा क्रिश्चियन नहीं है. Thou shall not kill, यानी वो पहले ही पढ़ता है. I, counting on his fingers. Thou shall not steal. Thou shall not covet your neighbor's goods or make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord in vain. Thou shalt have no other gods before me. With some hesitation, thou shalt remember the Sabbath day and keep it holy. Then thou shalt honor my father and mother, thy father and mother. Thou shalt not bear false witnesses. He is stuck. He counts back on his finger, knowing one is missing. Thou shalt not make unto thee any graven image. सो इसमें वो सारी थी 10 कमांडमेंट्स कि चोरी नहीं करोगे, नेबर्स की चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं रखोगे और कोई बुत शुत नहीं बनाओगे, अपने आका का नाम बग़ैर मकसद के यानी फजूल कस्मों में नहीं लोगे और कोई और किसी और को खुदा नहीं मानोगे. सैबत डे को याद रखोगे और होली बनाओगे इसको. फादर और मदर की इज़्ज़त करोगे, फॉल्स फिटनेसेस नहीं लेके आओगे. तो उसे लगता है कि एक मिस हो रहा है, तो वो दोबारा एक पुरानी कही हुई कमांडमेंट को रिपीट करता है. यू हैव सेड दैट ट्वाइस सर. अब हालांकि 10 में से 9 सुना रहा है तो यकीन हो जाना चाहिए. लॉस्ट, आई.
ही इज़ फेलिंग फॉर इट, ही इज़ फ्लेलिंग फॉर इट, कि वो सोच रहा है तजब्जुब में लेकिन उसको याद नहीं आ रहा। एलिजबeth delicately, adultery John, as though a secret arrow has pained his heart। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट एक सीन हुआ कि मे बी वो जान के नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके दिल में चोट था कि अडल्ट्री वो ऑलरेडी कर चुका था एलिजबेथ के साथ, एबिगेल के साथ, तो इसलिए बोलना नहीं चाह रहा था, या फिर वो चीज़ उसे वाकई जहन में नहीं आ रही थी। तो उसकी वाइफ ने जब याद कराया तो उसको अपना दुख भी याद आ गया कि जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे दूर है। तो बड़ा एक अचानक जो है ना मौके पे ये बात हुई। Trying to grin it away to Hale. You see, sir, between the two of us, we do know them all. Hale only looks at Proctor deep in his attempt to define this man. Proctor grows more uneasy. I think it be a small fault. कि मेरे ख्याल में मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की। Hale, theology, sir, is a fortress. No crack in a fortress may be accounted small. थियोलॉजी जो है, जो रिलीजन है, वो एक कले की तरह है, उसके अंदर छोटा सा क्रैक भी छोटा नहीं होता, उसे बड़ा समझा जाता है, हिफाजत की जाती है। ही राइजेस, ही सीम्स वरीड नाउ, ही फेसेस अ लिटिल इन डीप थॉट, कि उसको लग रहा है कि शायद प्रॉक्टर की वजह से, प्रॉक्टर की तरफ से कुछ दाल में काला है। देयर बी नो लव फॉर सैटन इन दिस हाउस मिस्टर, कि यहाँ पे शैतान को कोई पसंद नहीं करता। आई प्रे डेयरली, ही लुक्स टू बोथ ऑफ देम एंड अटेम्प्ट at a smile on his face, but his misgivings are clear. Well, then I'll bid you good night. तो फिर मैं तुम्हें खुदाफिज कहता हूँ, यहाँ से जाता हूँ। बेसिकली अब यहाँ पे हेल जो है वो थोड़ा सा परेशान हो चुका है ऑलरेडी कि इस बंदे के अंदर थोड़ी सी ख़राबी नज़र आ रही है क्योंकि इसको कमांडमेंट्स पूरी नहीं आती। हालांकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं है। मिसगिविंग होते हैं कि फीलिंग और डाउट और एंग्जाइटी जो कि उसके एटीट्यूड में सामने नजर आ रहा है, क्लियर है। Elizabeth, unable to restrain herself, Mr. Hale, he turns, I do think you are suspecting me somewhat. Are you not? कि मुझे लग रहा है कि आप मुझ पे यानी आई थिंक यानी कि किसी हद तक आपको मुझ पे भी शक है। Hale, obviously disturbed and evasive, छुड़वाना चाह रहा जान इस बात से। Good Proctor, I do not judge you. My duty is to add what I may to the godly wisdom of the code. I pray you both good health and good fortune. To John, good night sir, he starts out. कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, बाकी आपके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। With a note of desperation, I think you must tell him, John, कि तुम्हें बता देना चाहिए। What's that? Hale, क्या बताना है? Restraining a call. Will you tell him? कि तुम बताओगे? Slight pause. Hale looks questioningly at John. हेल को ये लग रहा है कि शायद जादू की कोई बात हो रही है और ये कुछ कॉन्फेस करना चाह रहे हैं। Proctor with difficulty. I have no witness and cannot prove it except my word be taken. But I know the children's sickness had not to do with the witchcraft. कि मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर कि इस चीज़ का, ये जो बच्चे बीमार हुए हैं, इसका विचक्राफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हेल स्टॉप स्ट्रक्ट नॉट टू डू, यानी क्या मतलब, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Proctor, Mr. Paris discovered them sporting in the woods. They were startled and took sick. Proctor ने उन्हें देखा डांस करते हुए तो वो डर गए, बीमार पड़ गए। Who told you this? तुम्हें कैसे पता? Hesitates, then Abigail Williams. Abigail ने बताया। Abigail? Aye. His eyes wide. Abigail Williams told you that it had not to do with the witchcraft, कि उसने खुद बताया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं था witchcraft से। He told me the day you came, sir. उसी दिन जिस दिन आप आए, उस दिन मुझे पता चला। Suspiciously, why did you keep this? तुमने छुपा के क्यों रखा? I never knew until tonight that the world is gone daft with this nonsense. मुझे तो आज पता लगा कि दुनिया इस चीज़ को लेकर पागल हो चुकी है, वरना मैं पहले बता देता। Nonsense, mister. I have myself examined Tituba, Sarah Good and numerous others that have confessed to dealing with the devil. They have confessed it. कि मैंने खुद उनको देखा जिन्होंने इस चीज़ को इतराफ़ किया, जो इस चीज़ को मान चुके हैं कि उन्होंने डेवल के साथ एक ताल्लुक़ रखा है। And why not? If they must hang for denying it, there are them that will swear to anything before they'll hang. Have you never thought of that? कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे
कुछ भी मान जाएंगे इस चीज़ के एवज में कि उन्हें फांसी ना दी जाए। तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? I have indeed, in this house, in his own suspicion, but he resisted. He glances at Elizabeth, then at John. And you, would you testify this in court? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कोर्ट में? I had not reckoned with going into the court, but if I must, I will. कि मेरा कोई इरादा नहीं है जाने का, लेकिन अगर जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊंगा. Do you falter here? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इरादा मुतज़लज़ल है, तुम गलती पे और आ रहे हो? I falter nothing, but I may wonder if my story will be credited in such a court. I do wonder on it. Then, when such a steady-minded minister as you will suspicion such a woman that never lied and cannot, and the world knows she cannot, I may falter somewhat, mister. I am no fool. हाँ, मैं परेशान होऊंगा, मैं इरादा बदलूंगा अगर मैं हालात देखूंगा. अभी तो मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन जिस तरह मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारी कोर्ट है, जो उसका हाल है, कि वो एक ऐसी औरत को भी, यानी रेबिका नर्स की बात कर रहा है, कि उसे भी सज़ा देने पे तैयार हो सकते हैं, या मेरी वाइफ को जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर मेरी बात की क्या अहमियत है? Quietly, it has impressed him. Proctor, let you open with me now, for I have a rumor that troubles me. It is said that you hold no belief that there may even be witches in the world. Is that true, sir? कि मेरी पास रूमर है कि तुम बिलीव ही नहीं करते विचेस पे, तो क्या ये बात ठीक है? He knows this is critical and it's striving against his disgust with Hale and with himself for even answering. तो उसे बड़ी एक उलझन हो रही है हेल से बात करते हुए इस बात का जवाब देने में. I know not what I have said. I may have said it. I have wondered if there be witches in the world, although I cannot believe they come among us now. होती होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो लाइक ऑल्दो आई कैनॉट बिलीव कि दे कम अमंग अस नाउ, कि ठीक है होंगी, हमारे दरमियान में शायद आती भी होंगी, शायद मैंने ऐसा कहा भी होगा जिस तरह आप कह रहे हो. देन यू डू नॉट बिलीव, यानी तुम नहीं मानते. आई हैव नो नॉलेज ऑफ इट. द बाइबल स्पीक्स ऑफ विचेस एंड आई विल नॉट डिनाई देम. बाइबल कहती है विचेस का, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है. एंड यू वुमेन, तुम, I cannot believe it. मेरा यकीन नहीं है. Shocked. You cannot. तुम नहीं मानती? Proctor. Elizabeth, you bewilder him. तुम उसे परेशान कर रही हो, मौका दे रही हो कि वो तुम पे शक करे. To Hale. I cannot think devil may own a woman's soul, Mr. Hale, when she keeps an upright way as I have. I'm a good woman, I know it. And if you believe I may do only good work in the world and yet be secretly bound to Satan, then I must tell you, sir, आई डू नॉट बिलीव इट. कि अगर विचेस को मानने में तुम ये कह रहे हो कि मैं जो सारी उम्र एक अच्छे कैरेक्टर के साथ रही और सारी उम्र खुदा की डिवोटेड रही, इबादत करती रही, और उस पर इल्ज़ाम है कि वो सीक्रेटली विच या सैटन के साथ मिली हुई है, तो फिर मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती. बट वुमन, डू यू बिलीव देयर आर विचेस इन? क्या तुम जानती हो या मानती हो कि दुनिया में विचेस हैं? If you think I am the one, then I say there are none. अगर तुम कहते हो कि मैं विच हूं, तो फिर मैं कहती हूँ कि कोई भी विच नहीं है. Usually do not fly against the gospel. The gospel. तुम बाइबल के अगेंस्ट तो नहीं जा रही. She believes in gospel, every word. वो हर एक लफ्ज को मानती है gospel के. Questions. Question Abigail William about the gospel, not myself. जाके Abigail से पूछो gospel का. मेरे से ये क्वेश्चनिंग मत करो. She do not mean to doubt the gospel, sir. You cannot think it. This be a Christian house, sir, a Christian house. कि वो मानती है इन चीज़ों को, उस पर शक मत करो. Hail, God keep you both. Let the third child be quickly baptized and go you without fail each Sunday to Sabbath prayer and keep a solemn, quiet way among you, I think. कि सीधे तरह चर्च जाया करो, तीसरे बच्चे को भी बैप्टाइज कराओ, ताकि तुम लोगों पे ऐसा शक ना हो. Giles Corey appears in the doorway. इन्हीं देर में Giles Corey आता है. John, Giles, what's the matter? They take my wife, Francis Nurse enters, and his Rebecca. To Francis, Rebecca's in jail? Francis, aye, she will come and take her in his wagon. We have only come from jail and they will not even let us in to see them. कि वो आए जेल में ले गए इनको वैगन में बिठा के,
हमें मिलने भी नहीं दे रहे। दे हैव श्योरली गॉन वाइल्ड नाउ मिस्टर हेल, कि दुनिया पागल हो चुकी है। गोइंग टू हेल, रेवरेंड हेल कैन यू नॉट स्पीक टू द डेप्यूटी गवर्नर, आई एम श्योर ही मिस्टेक्स दीज पीपल, कि वो गलती से इन लोगों को उठा के लेके गया। फिर काम योरसेल्फ मिस्टर नर्स, सब्र करो, ठीक हो जाएगा सब। माई वाइफ इज़ द वेरी ब्रिक एंड मोर्टर ऑफ द चर्च, कि मेरी वाइफ जो है, जो रेबिका नर्स है, वो तो इस चर्च की ब्रिक्स की तरह, यानी इतनी वो ज़्यादा सिंसियर है रिलीजन से। Mr. Hale indicating Giles and Martha Corey, there cannot be a woman closer yet to God than Martha. और जाइल्स को इंडिकेट करते हुए कहता है, और इसकी बीवी इससे ज़्यादा कोई रिलीजन के करीब हो भी नहीं सकता। हाउ इज रेबिका चार्ज मिस्टर नर्स, कैसे चार्ज हुई वो? विद अ मॉकिंग हाफ हार्टेड लॉ फॉर मर्डर, शी इज चार्ज मॉकिंग कोटिंग द वारंट for the marvelous and supernatural murder of Kitty Putnam's babies. What am I to do, Mr. Hill? उसकी अदालत की जो फैसला उसको मॉक करते हुए बोल रहा है कि बड़े सुपरनेचुरल किस्म के जो मर्डर्स हुए मिसेस पटनम की बेबीज़ के, उसका इल्ज़ाम ये बेसिकली पटनम ने इल्ज़ाम लगाया अपनी बेटी के थ्रू कि रेबिका नर्स पे इल्ज़ाम लगे और फ्रांसिस नर्स और रेबिका नर्स की जो ज़मीन शमीन है वो हथियार ले। इस तरह कोरे जिसके पास ज़मीन और लैंड काफ़ी है, उसकी भी वो प्रॉपर्टी वो लेना चाहता है, इसलिए वो उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सारों पे, यानी वो अपनी बेटी को यूज़ कर रहा है, रूथ को। He returns from Francis deeply troubled then. Believe me, Mr. Nurse, if Rebecca Nurse be tainted, then nothing's left to stop the whole green wood from burning. Let you rest upon the justice of the court. The court will send her home, I know. कि अगर रबीका की सोल टेंटेड है तो फिर ये याद रखो कि हर चीज़ जल जाएगी, यानी हर बंदा काबू आ जाएगा अगर रबीका के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो। लेकिन आई एम श्योर वो वापस आएगी अपने घर पे, बेफिक्र रहो। फ्रांसिस, यू कैन नॉट मीन शी विल बी ट्राइड इन द कोर्ट, यानी तुम्हें यकीन है कि उसका ट्रायल नहीं होगा कोर्ट में? Hale pleading, nurse, though our heart breaks, we cannot flinch. These are new times, sir. There is a misty plot afoot so subtle that we could be criminal to cling the old respects and ancient friendships. I have seen too many frightful proofs in the court. The devil is alive in Salem, and we dare not fail to follow wherever the accusing finger points. कि जहाँ जहाँ उंगली उठ रही है लोग पकड़ते जा रहे हैं, और वो पुराने ज़माने ख़त्म हो चुके हैं। ये नया ज़माना है जिसके अंदर डेवल को हमने खुद देखा सैलम में प्रूफ के साथ कि वो मौजूद है, और उसकी जो एक मैनिफेस्टेशन है उसको हम कोर्ट्स में देखते हैं। तो इस ज़माने में कुछ भी हो सकता है। एंगर, हाउ मे सच अ वुमन मर्डर चिल्ड्रन, कैसी औरत कैसे बच्चे मार सकती है? इन ग्रेट पेन, मैन रिमेंबर until the hour before the devil fell, God thought him beautiful in heaven. कि उस एक लम्हे जिसमें सैटन ने जिसमें डेवल ने बेगैरती की, जिसमें उसने अल्लाह से नाफरमानी की, खुदा से नाफरमानी की, उससे पहले वो उसकी एक इज्जत थी। तो कोई बंदा कभी भी गिर सकता है। Giles, I never said my wife were a witch, Mr. Hale. I only said she was reading books. मैंने तो कभी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कहा था वो किताबें पढ़ती है। Mr. Corey, exactly what complaint were made on your wife? तुम्हारी वाइफ पे क्या कंप्लेंट थी? The bloody mongrel Walcott, यानी Susanna Walcott, charged her. You see, he buy a pig of my wife 4 or 5 years ago, and the pig died soon after. So he came dancing in this for money back. So my Martha, she says to him, Walcott, if you haven't the wit to feed a pig properly, you will not live to earn money, she says. Now he goes to court and claims that from that day to this he cannot keep a pig alive for more than 4 weeks because my Martha bewitched them with the books. कि मार्था ने किसी ज़माने में वॉलकट को एक पिग बेचा था, जो कि सुजाना वॉलकट का फादर है, कि और वो उससे संभाला नहीं गया, मर गया। तो उसके पास आया कि पैसे वापस दो। तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम एक पिग संभाल नहीं सकते, तो उसको तुम्हें फीड कराना नहीं आता अच्छी तरह, तो बाकी पिग्स का क्या करोगे, तुम तो कभी ज़्यादा नहीं पाल पाओगे। तो वाकई नहीं संभाल पाता था। फिर जब उसके पिग मरते रहते थे तो उसने इल्ज़ाम मेरी वाइफ पे लगा दिया कि कुछ पड़ती है और मेरे पिग्स जो हैं बेविश्ड हो जाते हैं। एंटर एजिकल शीवर, तो शीवर यहाँ भी आ जाता है, ये पुलिस वाला है। गुड इवनिंग टू यू प्रॉक्टर। अब वो ये मुझे समझ नहीं आती कि कितने फजूल किस्म के ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। गुड इवनिंग टू यू मिस्टर प्रॉक्टर, और आया उसकी वाइफ को गिरफ्तार करने हैं।
कि यानी एक अच्छी शाम आपके नाम, आपकी बेगम को हम लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। Why, Mr. Shiva? Good evening. Good evening, all. Good evening, Mr. Hale. I hope you come not in business of the court. कि तुम सरकारी चक्कर पे तो नहीं आए. I do, Proctor. I'm clerk of the court now, you know. Enter Marshal Herrick, a man in his early 30s with somewhat shamed face at the moment. थोड़ी सी शर्मिंदा चेहरे के साथ आया. It is pity, Ezekiel, that an honest tailor might have gone to heaven, must burn in hell. You will burn for this, you know it. कि तुम जन्नत में जा सकते थे लेकिन तुम अपनी इन गलतियों की वजह से जहन्नम में जाओगे. Shiva, you know yourself, I must do as I am told. You surely know that Giles and I have as life, and you know you would not be sending me to hell. I like not the sound of it. I tell you, I like not the sound of it. He hears Proctor, but starts to reach inside his house. Now, believe me, Proctor, how heavy be the law. All is torn as I carry on my back tonight. He takes out a warrant. I have a warrant for your wife. तो एलिजबेथ के लिए वारंट लेके आया. टू हेल, यू सेड शी वर नॉट चार्ज, कि तुमने तो कहा था उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा. आई नो नथिंग ऑफ इट. टू शिवा, व्हेन वाज शी चार्ज? कब चार्ज हुआ इसके ऊपर, कब इल्ज़ाम लगा? आई एम गिवन 16 वारंट टुनाइट सर एंड शी इज़ गॉन. मुझे आज रात को ये वारंट्स मिले. हु चार्ज है? वाई? एबिगेल विलियम्स चार्ज है. कि एबिगेल विलियम ने इल्ज़ाम लगाया. व्हाट प्रूफ? व्हाट प्रूफ? Looking about the room, Mr. Proctor, I have little time. The court bid me search your house, but I like not to search the house. So will you hand me any puppets that your wife may keep here? तुम्हारी वाइफ अगर कोई puppets बनाती है तो वो मुझे दे दो. Puppets? I never keep no puppets, not since I was a girl. बचपन के बाद से मैंने puppets नहीं रखे. She was embarrassed, glancing. I spy a puppet, good Proctor. तो उसकी मैरी वेरन वाले puppet पे नजर पड़ती है जो उसने mental piece पे रख दिया था. Oh, going for it. This marriage. Shyly, will you please to give it to me? Handing it to him. As the court discovered a text in the puppet now, कि puppets के अंदर भी कुछ लिखा हुआ नजर आना शुरू हो गया. Shiva, do you keep any others in the house? और भी हैं? No, nor this either till tonight. ये भी आज से पहले नहीं था. What signifies a puppet? इससे क्या साबित होता? Why a puppet? Puppet may signify, now women, will you please come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगी? She will not. To Elizabeth, fetch Mary here. Shiva, no, I'm forbid to leave. I'm forbid to leave her from my sight. कि मुझे हुक्म है कि उस अपनी आंखों से दूर न जाने दूं. Pushing his arm away. You will leave her out of sight and out of mind, mister. Fetch Mary Elizabeth. Elizabeth goes upstairs. What signifies a puppet, Mr. Shiva? Why, they say it may signify that he has lifted the puppet's skirt and his eyes widen in astonishment and fear. Why this? Reaching the puppet, what's there? क्या ये? Why? He draws out a long needle from puppet. It is a needle, Herrick, it is a needle. Herrick comes towards it, angrily, bewildered, Proctor. And what signifies a needle? क्या मतलब है इसका? Shiva, why this go hard with her, Proctor? This, I had my doubts, Proctor, I had my doubts, but here's calamity. कि मुझे शक था लेकिन यहाँ तो वाकई क़यामत आ चुकी है. To Hale, showing the needle. You see it, sir? It is a needle. Why? What's meaning has it? इसका मतलब क्या है? एक ही बात बकवास करी जा रहे हो. Shiva, wide-eyed trembling. The girl, the Williams girl, Abigail Williams, sir. She sat to dinner in Reverend Paris' house tonight, and without word nor warning, she falls to the door like a struck beast. He says, and screamed a scream that a bull would weep to hear, and he goes to save her, and stuck 2 inches in the flesh of her belly, he draws a needle out, and demanding of her how she came to be stabbed, she to Proctor now testify it, for your wife's familiar spirit pushed it in. कि एबिगेल खाना खा रही थी पेरिस के साथ घर पे बैठ के, अचानक वो गिरी और एक बुल की तरह रोर करना शुरू हो गई. जब उसके पास पेरिस गया बचाने तो उसने देखा उसके पेट में 2 इंचेस अंदर ये नीडल एक खुबी हुई थी, और उसने बताया कि गुडी प्रॉक्टर यानी एलिजबेथ जैसी एक स्पिरिट आई जिसने उसको इससे स्टैप किया. Proctor, why she has done it herself. I hope you're not taking this proof, mister. ये उसने खुद किया होगा अपने आप को, और मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को सबूत नहीं बना रहे.
हेल स्ट्रक बाय प्रूफ, हेल अभी फिलहाल पागल हुआ है, उसे यकीन आ जाते हैं इन बातों पे। This hard proof to Hale, I find here a poppet good proctor keeps. I have found it, sir, and in the belly of the poppet a needle stuck. I tell you true, proctor, I never warranted to see such proof of well, but I bid you obstruct me not. Fry, अब मुझे रोकना मत क्योंकि इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कोई। Enter Elizabeth with Mary. Proctor जाता है उसके पास. Here now, Mary, how did this proctor, this puppet, come into my house? Frightened. What puppet's that, sir? ये जो puppet था. This puppet. Why, I think it's mine. It's your puppet, is it not? Mary Warren. It is, sir. And how did it come in this house? Why, I made it in the court and gave it to Goody Proctor tonight. कि मैंने बनाया था और मैंने इसको दिया. Now, sir, do you have it? अब समझ आई? Mary Warren, a needle have been found inside the puppet. इसके अंदर एक needle भी थी. Mary, why, I meant no harm by it, sir. मैंने इससे कोई गलत मकसद नहीं लिया. You stuck the needle in yourself? I believe I did, sir. Why say you now? क्यों? Child, you are certain this to be a natural memory? Maybe it perhaps someone conjures you even up to say this? कि क्या ये तुम खुद कह रही हो, तुम्हारे साथ वाकई ऐसा हुआ या तुम्हें कोई स्पिरिट तुम्हारे माइंड में ये चीज़ ला रही है? Conjures me? Why no, sir, I'm entirely myself. मैं खुद बोल रही हूँ. I think, let you ask Susanna Walcott. She saw me swing it in the coat. Ask Abby. Abby sat beside me when I made it. और एबिगेल मेरे साथ बैठी थी जब मैंने बनाया. सो एबिगेल इतनी चालाक है कि उसने ये देख लिया किसने पॉपेट बनाया है. उसने पूछ लिया होगा किसके लिए बना रही हो, तो उसने बता दिया होगा. इसने उसको देख लिया कि सुई घुसाते हुए, तो उसने वो सेम टू सेम चीज़ अपने साथ कर दी. टू हेल, बिड हिम बी गॉन. इसको यहाँ से चलता करो. योर माइंड इज श्योरली सेटल नाउ. बिड हिम आउट मिस्टर हेल. अब इसको यहाँ से भगाओ. एलिजबेथ, व्हाट सिग्निफाइज अ नीडल? क्या मतलब है इसका? क्योंकि वो ऊपर चली गई थी तब. मैरी, यू चार्ज अ कोल्ड एंड क्रूअल मर्डर ऑन एबिगेल. कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि तुमने एबिगेल का सफाक कत्ल करने की कोशिश की है. Murder, I charge no. Abigail was stabbed tonight, a needle was found stuck in her belly. And she charges me? I. Why, the girl is murderer. She must be ripped out of the word. उसे निकाल देना चाहिए. Murderer तो वो है. Shiva, you've heard that, sir? Ripped out of the word. Harry, you heard it? तुमने जुबान सुनी इसकी? Ripped out of the word. कि उसको टुकड़े टुकड़े कर दो. Proctor, out with you. निकल जाओ यहाँ से. Proctor, you dare not touch the warrant. Ripping the warrant, out with you. उसका वारंट फाड़ देता है. दफा हो जाए यहाँ से. You have ripped the deputy governor's warrant, man. Damn the deputy governor, out of my house. Now, Proctor इंसान बनो. Get you gone with them. You're a broken minister. तुम भी निकल जाओ. तुम किसी न काम के मिनिस्टर हो. Proctor, if she is innocent, the court, अगर वो innocent है तो कोर्ट उसे कुछ नहीं कहेगी. If she is innocent, why do you never wonder if Paris be innocent or Abigail? Is the accuser always holy now? Were you born this morning as clean as God's fingers? I'll tell you what's walking Salem. Vengeance is walking Salem. यानी मैं तुम्हें बताता हूँ सैलम में क्या हो रहा है. सैलम में सिर्फ बदला चल रहा है, इंतकाम चल रहा है. We are what we always were in Salem. हम वही हैं जिस हम पहले थे. But now the little crazy children are jangling the keys of the kingdom. लेकिन अब यहाँ की चाबियाँ छोटे पागल बच्चों के हाथों में. And common vengeance writes the law. और आम सा इंतकाम जो है वो कानून बनता जा रहा है. द वारंट्स वेंजियंस, आई विल नॉट गिव माई वाइफ टू वेंजियंस. और मैं अपनी बेगम को किसी इंतकाम के वाले नहीं करूँगा. आई विल गो जॉन, मैं जाऊँगी. यू विल नॉट गो. आई हैव 9 men आउटसाइड. यू कैन नॉट कीप हर. द लॉ बाइंड्स मी सर. आई कैन नॉट बच. मैं लॉ को अवॉइड नहीं कर सकता. 9 बंदे बाहर खड़े हैं, वो लेके जाएंगे. टू हेल, विल यू सी हर टेकन? क्या तुम खड़े होकर मुँह देखते रहोगे? Proctor, the court is just. मान लो जो कोर्ट है वो जस्ट है, वो कभी भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगी. Ponitus Pilate. Pilate was a Roman governor who condemned Jesus to be crucified, and he washed his hand before the crowd to show that he refused to take responsibility for Jesus' death. तो वो कह रहा तुम भी उसकी तरह हो जिसने जीसस को क्रूसीफाई करने का हुक्म दिया था. God will not let you wash your hand of this. उसने तो अपने हैंड वॉश कर लिए थे, लेकिन तुम्हें खुदा मौका नहीं देगा. जॉन, आई थिंक आई मस्ट गो विद देम. आई कैन नॉट बेयर टू लुक एट हर. मैरी, देयर इज अ ब्रेड इनफ फॉर दिस मॉर्निंग. यू विल बेक इन द आफ्टरनून. हेल्प मिस्टर प्रॉक्टर एज यू वर हिज डॉटर. यू ओ मी दैट एंड मच मोर.
पीछे ब्रेड पड़ी है उसे बेक करना, प्रॉक्टर की हेल्प करना एक बेटी की तरह। शी इज़ फाइटिंग और वीपिंग। व्हेन द चिल्ड्रन वेक स्पीक नथिंग ऑफ विच क्राफ्ट, इट विल फ्राइटन देम, कि जब बच्चे उठें तो ऐसी बात ना करना, वो डर जाएंगे। आई ब्रिंग यू होम, आई ब्रिंग यू सून, मैं तुम्हें लेके आऊँगा। ओ जॉन ब्रिंग मी सून, वाकई जल्दी आना। आई फॉल लाइक एन ओशन टू द कोर्ट, फेयर नथिंग एलिजबेथ, मैं एक तूफान की तरह आऊँगा। आई फेयर नथिंग, टेल द चिल्ड्रन आई हैव गॉन टू विजिट समवन सिक। ही वॉक्स, और चली जाती है। प्रॉक्टर, हैरिक हैरिक डोंट चेन हर, डैम यू मैन यू विल नॉट चेन हर, ऑफ विद देम, आई विल नॉट हैव इट, आई विल नॉट हैव हर चेन, उस पर जंजीरें मत डालो। खैर जाते हैं वो जाइल्स। एंड येट साइलेंट मिनिस्टर, इट इज़ फ्रॉड, यू नो इट्स फ्रॉड, व्हाट कीप्स यू मैन, कि तुम तो मुंह पे ऐसी जो है ना जिप लगा के खड़े हो गए हो जैसे तुम्हें बोलने नहीं आता, गूंगे हो गए हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा ये फ्रॉड है। Proctor is half praised. Proctor, I'll pay you, Herrick, I'll surely pay you. Herrick panting, God save John, I cannot help myself, कि मैं मजबूर हूँ। I must chain them all, मुझे इन सबको चेन डालनी पड़ेगी। So ये प्रॉक्टर है जिसकी बेगम भाग चुकी है, वह पकड़ी गई है, सॉरी। Proctor stands there. Hail, Mr. Proctor, out of my sight, दफा हो जाए यहाँ से। Charity Proctor, थोड़ी इज्जत कर ले यार मेरी। What I have heard in her favor, I'll not fear to testify in the court. जो उसके बारे में अच्छी बातें हैं मैं बताऊंगा। God help me, I cannot judge her guilty or innocent, I know not. Only this consider, the words goes mad, and it profit nothing you should lay the cause to the vengeance of a little girl. एक छोटी सी बच्ची का वेंजेंस कुछ नहीं तुम्हें कह सकता, बेफिक्र रहो, कुछ भी गलत नहीं होगा। Proctor, you're a coward. Though you be ordained in God's own tears, you are a coward now. बेशक तुम्हारे अंदर खुदा की लाइट होनी चाहिए, लेकिन तुम मिनिस्टर हो, लेकिन तुम बुज़दिल हो। Proctor cannot thank God be provoked so grandly by such a petty cause. The jails are packed. Our greatest judges sit in the Salem now, and hangings promised. Man, we must look to the cause proportionate. Were the murders done, perhaps, and never brought to the light, abomination, some secret blasphemy that stinks to heaven, think on cause, man, and let you help me to discover it. For there is your way, believe it, there is your only way. When such confusion strikes upon the word, let you counsel among yourself. Think on your village, and what may have drawn from heaven such a thundering wrath upon you all. I shall pray, God open your eyes. Francis, I never heard no murder done in the Salem. क्या अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सुना ऐसा। Proctor, leave me, Francis, leave me. John, tell me, are we lost? ये क्या हमारा बैंड बज गया? Go home, Giles, we'll speak on it tomorrow. Let you think on it, we'll come earlier. Hey, go Giles, go now. Good night then. ये भी अगेन गुड नाइट, वो उनका घर बड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन गुड नाइट, शब बखैर। Giles, Marivaran, Mr. Proctor, very likely they'll let her come home once they're given proper evidence. कि जब उन्हें सबूत दिया जाएगा तो वापस आ जाएंगे। You're coming to the court with me, Mary. You will tell them in the court. कि तुम मेरे साथ आओगी और सबूत बनोगी। I cannot charge murder on Abigail. मैं Abigail पे मर्डर का चार्ज नहीं लगा सकती। Moving menacingly towards her, you will tell the court how that puppet come here and who stuck the needle in. She will kill me for saying that. Proctor continues towards her. Abe will charge lechery on you, Mr. Proctor. कि अबे तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देगी कि तुमने उसके साथ एडल्ट्री की। अब प्रॉक्टर यहाँ पे हिल जाता है। एक तो मेरी वेरन को पता है इस बात का, दूसरा सारी बात है अब वहाँ पे कोर्ट में बताया जाएगा। शी टोल्ड यू, उसने तुम्हें बता दिया। आई हैव नोन इट सर, शी विल रूइन यू विद इट। आई नो शी विल, वो तुम्हें तबाह कर देगी। Proctor, then her saintliness is done with. We will slide together into our pit. You will tell the court what you know. तो ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं डूबूंगा तो उसको लेके डूबूंगा और तुम कोर्ट को बताओगी जो हुआ। In terror, I cannot. They'll turn on me. वो मेरे खिलाफ हो जाएंगी। Proctor उसको पकड़ता है और वो बार बार कह रही है, I cannot, I cannot. My wife will never die for me. मेरी वजह से मेरी बेगम नहीं मरेगी। I will bring your guts into your mouth but that goodness will not die for me. तुमसे तो मैं बुलवा के छोड़ूंगा, लेकिन वो नहीं मरेगी।
Mary, I cannot do it. I cannot. Proctor, grasping, make your peace with it now. Hell and heaven grapple on our backs, and all on our pretenses ripped away. Make your peace. Peace, it is a providence, and no great change. We are only what we always were, but naked now. I, naked. And the wind, God's icy wind, will blow. अब इसमें यह है कि एंड में वो उसे तसल्ली दे रहा है, उसे बता रहा है कि अब जो होगा होके रहेगा, चीज़ें हमारे सामने हैं, अब या आर है या पार है, अब बीच में रहने वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है। लेकिन मैरी वेरन कंटिन्यूसली कही जा रही है कि मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे बस से बाहर है, वो लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगी, मुझे मारेंगी। लेकिन प्रॉक्टर जो है वो एडमेंट है, डिटरमेंट है कि ये मैरी वेरन वहाँ जाके गवाही देगी कि वो पॉपेट ये लेके आई थी, इसने उसमें नीडल लगाई थी और वो उसने एलिज़ाबेथ को गिफ्ट किया था, वो एलिज़ाबेथ ने खुद नहीं बनाया था। और जो एबिगेल कर रही है वो फ्रॉड है। हालांकि प्रॉक्टर को पता है उसकी अपनी इज्जत अब दाव पे है। वो सोसाइटी जो डांसिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, नॉवल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, वहाँ पे लेचरी और एडल्ट्री बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो इस अपनी वाइफ को बचाने के लिए ये भी सहने को तैयार हो चुका। थैंक यू वेरी मच। वील स्टार्ट फ्रॉम एक्ट 3 in next video.